In this chapter, we will see about the constructor and destructor. So the first one is define the constructor and explain with it example. Okay, so the constructor is a special member function whose task is to initialize the object of its class. Constructor is a special because its name is as same as the class name. Constructor is called when object of its class is created. Whenever you create object inside the void main or integer main in the main function, at that time constructor automatically call. Okay, it construct the value of data members of its class. Okay, for example, class IT. In that I am taking public. In that I am taking one constructor. So this is called a constructor declaration. Okay, this is the default constructor I am taking. Here I am just closing the curly braces. Here I am taking IT scope resolution operator IT. So here I am taking the default constructor. Over here again, okay, outside the class मैंने एक function call करवाया. Here I am taking integer a, c in a किया, c out a किया. यहाँ पे user के पास से एक value लूंगा, यहाँ पे print करवाऊंगा. फिर void main किया, itcpp किया. So whenever you call the particular object of the class, at that time constructor is called. Okay. This is the basic syntax of the constructor. Okay. Now, second one is the characteristics of constructor. Constructor must be declaring in public section. They are automatically called when objects are created, okay, of particular class. They don't return any value. They can have default arguments. Constructor can't be virtual, okay. We can't refer address of constructor. An object with a constructor can't be used as a member of the union. Constructor can be overloaded. So these are the some constructor characteristics. Okay, the next one is explain default constructor and parameterized constructor. Now what is the difference between default and parameterized? Let's see. Default constructor, when there is no argument in the constructor, then it is called the default constructor. Parameterized constructor, if constructor takes argument, then they are the parameterized constructor. For example, here I am taking class exam. In public mode I am taking exam as a constructor. So this is called your default constructor because it has no argument over here. And here I am taking exam integer marks. Here I am taking integer marks. So this is called the parameterized constructor because I am taking integer marks as an argument. Okay, so this is called default and parameterized. Next one is explain constructor with a default arguments. Okay, if we initialize arguments in constructor declaration, okay, then it is known as constructor with default arguments. Class life, okay, then public life integer a comma integer b equal to 1. Here I am taking 1, okay, by default b का 1 है, यहाँ पे equal to 1 ले लिया मैंने. So in above example argument b is a default argument. अगर मैं यहाँ पे कोई भी default argument ले रहा हूँ, उसको value दे रहा हूँ, so that is called the default argument of that particular construct. Okay. Now next one is explain dynamic initialization of object. Okay. When we give initial value of object during runtime of program, okay, now then it is known as the dynamic initialization of an object. Okay, here I am taking class IT public IT integer दो लिए मैंने, ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करवा दी मैंने, यहाँ पे क्लास को खत्म किया मैंने. अगेन आई एम डिफाइनिंग वन function outside the class IT scope resolution operator IT integer a and b. Here I am taking a and b. Okay, this is the valid argument. Okay, previous lecture में मैंने समझाया था argument कैसे पास करना है, ठीक है. ये भी valid argument है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे मैंने किया c out a and b void main integer x and y clr ser. If you are using turbo c++, you can put this, otherwise you don't have to put this. c in x and y. Okay, x and y c in किया मैंने रन टाइम पे यूजर के पास से वैल्यू लेने के लिए. itcpp किया, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया, ठीक है, x एंड y किया. तो यहाँ पे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुआ x एंड y का डायनेमिक. ओके, वी कैन प्रोवाइड वेरियस इनिशियलाइजेशन फॉर्मेट्स. ओके, इसका ये एडवांटेज है, ठीक है, रन टाइम पे. यू शुड रन दिस प्रोग्राम एंड टेक द डिबगर. ओके, पुट द डिबगर देयर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन कॉपी कंस्ट्रक्टर विथ एग्जांपल. Copy constructor can be used to initialize and declare an object and to copy value of one object into another object. Okay.
A reference variable is used as an argument to copy the constructor. Okay, whenever the word come reference, at that time you have to use and percentage. Now here I am taking class it, again I am taking integer a before the public. Yeah, it integer x, okay, it and percentage y, reference variable is y. Okay, we are taking reference variable. Okay, here मैंने class को close कर दिया. Here I am declaring non member function it is co-precision operator, then it integer x. Here I am taking a equal to x, x की जो भी वैल्यू है ये a में चली जाएगी just because of this assignment operator. Here I am taking c out a को प्रिंट करवा रहा हूं मैं. ओके okay, यहाँ पे it is कोप्रिसिजन ऑपरेटर, अगेन it ले रहा हूँ, it एंड एन y करवा. ठीक है, a इक्वल टू y डॉट a किया क्योंकि a को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो डॉट कर दिया यहाँ पे, c आउट किया एंड एल a. ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली नाउ सो दैट इज कॉल्ड योर कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, नाउ explain dynamic constructor. Here, the constructor which can be used to allocate a memory at runtime is known as a dynamic constructor. Okay. New operator can be used to allocate a memory. For example, class ABC I am taking integer L, character star name. Okay, यहाँ पे क्या है, पॉइंटर है आपका. ठीक है, पब्लिक में एबीसी लिया है, एबीसी लिया तो ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. यहाँ पे क्लोज कर दिया है मैंने यहाँ पे शुरू करके. ठीक है, एबीसी कैरेक्टर एस किया, दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे अगेन मैं पॉइंटर ले रहा हूँ. एल इक्वल टू एसटीआर लेन एस किया, एसटीआर लेन का यूज क्या है. ओके, कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चाहिए तो एसटीआर लेन का यूज कर पाओगे आप. यहाँ पे नेम इक्वल टू न्यू कैर किया, एल प्लस वन किया. ठीक है, यहाँ पे न्यू कैरेक्टर ऐड करवाने के लिए यहाँ पे एल प्लस वन कर रहा हूँ. अभी एसटीआर सीपीवाई नेम एस कर रहा हूँ. ठीक है, एसटीआर सीपीवाई मतलब एस का है जो भी वो नेम में कॉपी करेगा. ठीक है, so that is called the strcpy. यहाँ से यहाँ पे कॉपी करेगा एस से नेम. now I am taking void display, in that I am taking c out name को प्रिंट करवाया, यहाँ पे क्लास बंद करवाया मैंने. ठीक है, void main किया मैंने, कैरेक्टर पॉइंटर एच किया, c in एच किया, रन टाइम पे लेगा वैल्यू. abc p of h किया, यहाँ पे p डॉट डिस्प्ले किया. ओके, कैरेक्टर एच किया मैंने यहाँ पे सी इन में एच किया. ओके, एबीसी पी ऑफ एच किया, अगेन आई एम रिपीटिंग पी डॉट डिस्प्ले किया तो सी आउट में जो भी नेम होगा वो लेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, सो इन दिस प्रोग्राम द स्टेटमेंट नेम इक्वल टू न्यू कैर एल प्लस वन represent the dynamic allocation of the memory. You can run that program in code blocks also and turbo C++ by putting the debugger, always remember. Okay, if it returns greater than equal to 0 value to pointer, then answer will be executed, otherwise not. Okay, if you return greater than or equal to 0 value to pointer, then answer will be executed, otherwise it will not execute. Okay, यहाँ पे रखना है. ठीक है, now the next question is explain multiple constructor in a class or explain constructor overloading. Okay, in exam may be asked what is multiple constructor or what is constructor overloading. At that time you have to put this: when same constructor is defined multiple times in a class, then it is called the constructor overloading or it is called the multiple constructor. Now for example, here I am taking class it, in a public I am taking it integer x, this is called my parameterized constructor. Again I am taking it integer y column, integer z, again I am taking the parameterized constructor, and here I am close the class. यहाँ पे मैंने आउटसाइड दी क्लास मैंने एक फंक्शन लिया है. ठीक है, it देन प्रोपोजिशन ऑपरेटर it इंटीजर x, यहाँ पे मैंने c आउट x करवाया, जो भी प्रिंट हो जाएगा जो भी होगा. सेम चीज मैंने y and z में की, y and z को प्रिंट करवा दिया. ठीक है, void main में it cpp1 को पास किया. ठीक है, it cpp करके, तो cpp एक ऑब्जेक्ट है. अगेन it का एक अलग से ऑब्जेक्ट लिया dsm 2 and 3, यहाँ पे पास किया. ठीक है, सो इन अबव एग्जांपल कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड 2 टाइम्स. ओके, सो इट इज ओवरलोड. दोनों टाइम पे हमने डिफाइन किया है, दोनों टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है. सो दिस इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ question 9 is explain destructor with example. It is a special member function which is used to destroy the objects that are created by the constructor.
name of destructor is same as class name but preceded by the tilde. Okay, whenever you press shift plus tilde, okay, in your keyboard, okay, so it will give you the sign like this, that is called tilde. Okay, so here I am taking one program class IT public. Here this is one constructor and this is called the destructor. Here I am closing down the class, taking outside the function. Okay, here I am taking cout im, then here I am taking again outside the function, okay, with the destructor cout hr. here I am taking void main it and cpp, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड दी होल डिस्ट्रक्टर. ओके, जो भी होगा कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट उसको डिस्ट्रक्ट करेगा. ओके, नाउ characteristics of the destructor. Destructor never takes any argument. Destructor doesn't return any value. It invokes by the compiler. Invokes का मतलब enter होना upon exit from the program. Okay. Now the today's quote is, the secret of success is to do the common things uncommonly well. Okay, we'll see you in the next video. Always be a learner.